Very good morning, students. I am Rajni Galot, PGT English from Bhaurav Devras Saraswati Vidya Mandir. Today, I am going to teach you about the invitation. I have told you what is an invitation and what are the characteristics of the invitation. Today, I will give you some examples of formal invitation and I also will tell you some important points for to write a formal invitation. What points should be kept in our mind when we are going to write a formal invitation. Firstly, when जब हम किसी ग्रैंड फंक्शन के लिए इनविटेशन कार्ड प्रिंट आउट कराते हैं तो बहुत वी प्रिंटेड इट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए इसको प्रिंट कराते हैं फॉर अ लॉट ऑफ इनवाइटीज. सो दीज आर रिटन इन द थर्ड पर्सन. ये हम थर्ड पर्सन में फॉर्मल इन्विटेशन वेदर वी आर राइटिंग इन रिप्लाई और इन्विटेशन we have to use third person of the pronoun in formal invitation. In case of VIP is invited, if some VIP is invited in the function, then you will mention the name of that invitee, not all of the guests, all of the invitees, only the chief guest name you will mention in your card. And name of the invitees is not to be included, as you know that when we I have already told you, when we invite someone, then we do not mention that name of that invitee in the card. We mention the name on the envelope. So address is to be written only on the envelope. We write the address on the envelope and the name of the invitee is also on the envelope. And we use simple present tense in this invitation. The date of writing is not to be given. As you know, जब भी आप कार्ड छपवाते हैं किसी भी चीज़ का, क्या उसमें आप कार्ड में उस दिन की डेट छपवाते हैं जिस दिन आप कार्ड छपवा रहे हैं या आप दे रहे हैं? नहीं, हम फॉर्मल इनविटेशन के कार्ड में डेट मेंशन नहीं करते. ओके, सो देयर इज नो सिग्नेचर ऑफ द एंड इवन वी आल्सो डू नॉट साइन ऑन दैट फॉर्मल इनविटेशन. होस्ट के कोई सिग्नेचर नहीं होते. एंड देयर इज नो द एब्रीविएशन RSVP. RSVP का मतलब है फ्रेंच रिस्पॉन्स. ये दिस इज द वर्ड ऑफ फ्रेंच रिस्पॉन्स इज सिल्वर प्लेट, दैट इज प्लीज रिप्लाई इन रिटर्न इज टू बी बिलो. वो ठीक हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं एंड वी विल राइट द नेम ऑफ द होस्ट एंड ऑल्सो द फोन नंबर ऑफ द होस्ट. Put the invitation into a box and always remember this, that you will put the invitation of all kinds in a box and don't exceed 50 words. Okay, this is the question. You are Kanchan Deepa Shri Dheeraj Garg of Gurgaon. Okay, and this is the name of the host and you have to invite, you have to conduct a invitation card. So how will you write an invitation? First of all, you will write the name of the host, Mr. and Mrs. Dheeraj Garg. Then the name requires the pleasure of your wedding present and requires the pleasure of your company on the auspicious occasion of their daughter's marriage. Kanika with, you will write the name of the daughter, Kanika, daughter of Mr. and Mrs. You can mention in this line. Either you can you have written at the top of the invitation. And to whom is she going to get married? With Kunal. And you will write the name of the parents of the groom also. Okay, and then you will give date and day and at venue. Okay, at this is the venue. Then again you are giving the date and timing of the function. Okay, and always remember that this will be for in this format. And the RSVP Mr. and Mrs. Dheeraj Garg. Then you will mention contact number. सॉरी, स्लाइड में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा. एंड आप राइट हैंड साइड पर लिखेंगे विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. सो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ invitation, formal invitation. Thank you students, have a nice day.